if you have, मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ बोर्ड पे, then I will go to the past paper questions. Okay. कौन सा क्वेश्चन करो तुमने? 1 और 2 भी नहीं हुए तुमसे? मैंने ही कर दिए थे वो तो। हाँ, 3 भी मैंने बोर्ड पे करा हुआ है। लो चलो, I will do 1 or 2 questions on the board, then we'll go on to past paper questions. Okay, I'm discussing question number 10 at the moment because 10 important है, मैं 10 भी डिस्कस कर लेता हूँ। चलो, okay, so the question says the diagram shows part of the curve. The shaded area is rotated through 360 degrees about the x-axis, and x is equals to p. Show that as p tends to infinity, the volume approaches the value 2 pi. It is saying कि जो limit है, जो maximum limit है, it can reach up to infinity. ठीक है? So what you will do is to find the volume. The formula is the limits, upper and lower limit, which is infinity and 0. The equation is 2 upon 2x plus 1. The first thing we do is we whole square the equation, and then we integrate it, and then we add pi to it. So this is what we learned. Did you go over the lesson? Volume wala. देख लो पहले, वरना समझ नहीं आएगा। 5 minutes में देख लोगे। Okay, so the volume is 2 pi over here. When I whole square it, this will become can I write as 4 upon 2x plus 1 whole square, right, Uruj? And then I will bring the 2x plus 1 in the numerator. Okay, limits are again infinity and 0. Pi is equals to 2 pi. I can cancel out pi right now as well. Now, when I integrate the right hand side, what I will get is, let's keep the 4 outside. So when I integrate 2x plus 1 to the power of minus 2, I will add 1 power 2 pi. But it's given in the question. It's given in the question, the volume approaches the value 2 pi. Okay. Okay. So when I integrate this, that this becomes 2x plus 1 to the power of minus 1, and then we also divide by the derivative, which is 2, and with the new power, which is minus 1. So this will become 2 is equals to, acha, I still haven't put in the limits, 2 upon 2x plus 1 minus के साथ, right? 2 1s are 2 2s are यूं आ जाएगा. Now I will have to also apply the limits. Limits क्या है मेरे पास? Infinity and 0. Now this is a very important thing you people will have to understand. 1 divided by 0 is what? Infinity. 1 divided by 0 is infinite. So 1 divided by infinity will also be equals to 0. Okay. Now I have the upper limit, which is infinity, and the lower limit is 0. So minus 2 upon, नीचे infinity आ जाएगा, minus 2 upon lower limit क्या है? 0 ना, तो 0 plus 1 1 आ जाएगा. ठीक है, सही है. ओके, तो तो कैंसिल. ओके, minus 2 divided by infinity, this will be equals to 0 plus 2. So can I say that it asks us to show that the volume approach the value of 2 pi, और हमारी वैल्यू ये 2 ही आ रही है. बस हो गया, प्रूव हो गया. ठीक है. ओके, एनीवन एल्स हैज एनी प्रॉब्लम विद वॉल्यूम? The last part. Okay. Listen, Peter, once I've integrated it, now I plug in the limits. I have to show that the volume is 2 pi. Okay. So I mean, I can add pi at the end as well. So I substituted the limit infinity over here. So minus 2 upon infinity, that is 0. And then minus 2 upon, I put x is equals to 0. So minus 2 upon 1 is minus 2, right? And minus minus becomes a plus. So minus 2 upon infinity is 0. This becomes minus minus plus and 2. So I just had to show the answer will be 2 pi, okay? And I've shown it. Again, the volume questions are done exactly the way we do the area questions. Only the difference is we whole square and then we add pi to the final answer, okay? Which brings me down to the past paper questions now. Now, differentiation integration sometimes does come together in the question as well. It can be separate as well. I'll be doing a couple of questions for you people on the board explaining how to attempt any past paper question. Subhan, I would want you to look at the board.
Stop with that for the time being. मैं आपको explain कर दूंगा. I will explain exactly how you will attempt any integration or differentiation question. Whatever we have learned so far, you will only be using that, and that will be enough to attempt any question that comes up किसी भी अगर. ठीक है? Okay, starting with this question. In first part, it says dy dx is given. Find the equation of the curve. What did we learn? That if we integrate this equation, we will get y is equals to, है ना? तो सबसे पहले what you will say, write is dy dx is equals to, write it like 2x power minus half. ठीक है? It is always better to write it like this. Now integrating both the sides, I will get y is equals to 2x. When I integrate, I add 1, है ना? So ये x power half हो जाएगी और divided by half. When I integrate 1, I get x plus c. So this will become y is equals to 4x power half minus x plus c. And the point given is 9,5. In place of y, I will write 5. In place of x, I will write 9. 9 square root is 3. So I will just ignore that. 12 minus 9 is 3. And c is equals to 2. So your final equation will be written as 4 root x, ऐसे ना भी लिखो, it's okay, plus 2. And you will make a box around your answer. Please start making a habit that you will make a box around your answer. So that's the first part. ठीक है? Past paper question है, very straightforward. Find the coordinates of the stationary point. Again, differentiation. Stationary point means dy dx will be taken equals to 0. So dy dx is already given. ठीक है? dy dx क्या दिया है? 2 upon root x minus 1, and I will write it equals to 0. 2 upon root x is equals to 1. Root x is equals to 2. And whole squaring both the sides, x is equals to 4. Once I have the value of x, to find the y value, I already have the equation. है ना? So in the equation, in place of x, I can write 4. So square root 4 is 2 minus 4 plus 2. 8. The answer is 6. So the coordinates of the stationary point are 4, 6. ठीक है? Okay. Next part says find an expression for d square dx square, मतलब double differentiate. Okay, so I will differentiate the dy dx one more time, and then nature means if it is positive minimum point, if it is negative maximum point. तो अब मैं इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर देता हूँ वापस से. dy dx क्या था मेरे पास? That was 2x minus half minus 1. So when I differentiate this, what will I get? Minus half into 2 कितना होता है? Minus 1. x पावर हो जाएगा -3/2, है ना? I can write it as -1 upon x power 3/2. My answer will be negative, क्योंकि पूरे आंसर के साथ नेगेटिव लगा हुआ है ना. x की जो भी वैल्यू ले लूं, नहीं, अगर x की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ सकती क्योंकि स्क्वायर रूट हो रहा है. या सो द आंसर विल बी अ नेगेटिव आंसर, which means it will be a maximum point. So you will say 4,6 is a maximum point on the curve. ठीक है? And finally, this is a good question. The normal to the curve at P makes an angle of tan inverse of K with the positive x-axis. हाँ, पूछा ना नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब ही मैक्सिमम मिनिमम होता है. ठीक है? ओके, द नॉर्मल टू द कर्व एट पी. ओके, पहले जो एक काम कर लेते हैं. सो इन द लास्ट पार्ट विच इज पार्ट 4 और पार्ट डी, देखो, लेट्स से दिस वाज द पॉइंट 9 एंड 5. ठीक है? पॉइंट पी है. नॉर्मल टू द कर्व मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ. ये देखो, ये टेंजेंट है, सो नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है? What the question is saying, the normal to the curve makes an angle of tan inverse of k with the positive x-axis. Find the value of k. Beautiful. अब आप लोग गौर से सुने इस चीज को. देखो बेटा, this is something that you will be using moving forward with many of your questions. और इसमें आपने समझना क्या है कि let's say I make a line over here. ठीक है? इस लाइन का ग्रेडियंट है 3/2. This 3/2 what it actually means is, ये आप लोग को पता होना चाहिए, 3/2 का एक्चुअल मतलब क्या होता है.
ग्रेडियंट इज y अपॉन x, राइट? तो ये 3 हो गया और ये 2 हो गया. सो दिस एंगल हाउ विल आई विल फाइंड tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 2, है ना? तो इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, you can just directly do tan inverse of the gradient. If you want to find the angle with the horizontal axis, you can just do tan inverse of the gradient. ठीक है? रिमेंबर दिस, रट्टा नहीं लगाना, समझना है कि मैंने आपको जब यहाँ पे लाइन बना के दिखाई है, सही है? तो इफ आई हैव द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी, आई कैन फाइंड द ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट पहले निकालना होगा, राइट? सो डी वाई डी एक्स मेरे पास ऑलरेडी क्या है, 2/√x-1, and point P is 9,5. So what is the gradient at point P? X की जगह डाल दो 9, तो ये 2/3 - 1 कितना होता है? -1/3, है ना? So if this is the gradient of the tangent, what is the gradient of normal? +3, negative reciprocal, O levels. ठीक है? So the gradient of normal is 3. Now what I just explained was, और मैं आपको दिखाता हूँ, let's say ये tangent है और दिस इज द एंगल इट इज मेकिंग विद द एक्स एक्सिस. ठीक है? ग्रेडियंट 3 एक्चुअली मींस व्हाट, मैं आपको ये समझा देता हूँ अगेन. दिस इज 3/1 एंड ग्रेडियंट इज y अपॉन x, सो दिस इज y3 और ये वैल्यू है 1. तो ये एंगल k है हमारे पास. सो आप करोगे tan इनवर्स ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, k की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू 3 है ना, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ k लिखा हुआ था और हमारे पास क्या आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ 3. तो आपको आंसर बस 3 देना है, एंगल नहीं पूछ रही है आपसे. इट इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ के, और इसका ख्याल रखना है आप लोगों ने. दिस इज वेयर पीपल लूज 1 or 2 marks. You might think they're asking you for the angle. In actual they're not, they're just asking you what will you put in place of k. हम k की जगह ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लगाना था हमको, जो 3 आ चुका था. ठीक है? बस that's it. Guys, give me a thumbs up. Ahmad Ali, Sama Wajia, if you have understood this question. Again, past paper questions will be very straightforward. You just have to attempt them in a step-by-step manner. कोई step miss नहीं करना. I hope you have understood this question. Obviously, I'll be doing 1 or 2 more questions for you people on the board, जो मुझे लगता है कि आप लोग को आइडिया होना चाहिए इन चीजों का. And then you will be doing most of the questions on your own. ठीक है? Okay. So ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन आ गया है. ये देखो 11-11, 12-12 मार्क के डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्वेश्चन आते हैं in the exam. They are the lengthiest normally. ठीक है? So let's do this question as well. सुबह में यहाँ पे वॉल्यूम का रिवाइज करा दूंगा, बट अगेन एक बार लेसन देख कर आया करो. मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास से पहले लेसन देख लिया करो, अगर मैं क्लास में सो जाए. लेकिन अब अच्छा, ओके. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड सी. पहली पार्ट की. मोहम्मद बेटा प्लीज स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन. It says the diagram shows the curve y is equals to this, meeting the x-axis at A, y-axis at B. The y-coordinate of the point C is 3. So this is x comma 3. Can I find the x-coordinate? Obviously, the y-coordinate is given. Whole square both the sides, you get 9 is equals to 1 plus 2x. So 8 is equals to 2x. X is equals to 4. सही है. C के कोऑर्डिनेट तो आ गए मेरे पास 4,9, 4,3. अब B is on the y axis. Y axis का मतलब क्या हुआ? x0. x0 डाल दूंगा इक्वेशन में तो y is equals to 1 आ जाएगा, राइट? तो ये तो B का कोऑर्डिनेट भी आ गया. तो फाइंड कैसा करना था? B और C का हो भी गया. Find the equation of the normal to the curve at C. नॉर्मल टू द कर्व का मतलब क्या हुआ? पहले dy dx, right? This will give us gradient of the tangent. I will keep on repeating. dy dx करने से we get gradient of the tangent. Yeah, and then we'll go to the perpendicular one. Okay, so you will decrease the power by 1 and multiply it with the derivative of 1 plus 2x, which is 2. 2 and 2 cancels. So 1 upon 1 plus 2x to the power half is your gradient of tangent. X की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, right? So 1 upon 4 to the 8 plus 1, 9. 1 upon 3 is the gradient of tangent. ठीक है? So can I say gradient of normal will be -3?
if I have the gradient of normal to find the equation, I already have the point at C, which is 4 comma 3. So equation will be y minus 3 is equals to minus 3 into x minus 4. इक्वेशन बन गई, ठीक है। y equals to mx plus c use कर लें, that you learned in O levels, whatever you want to use, or you can use this formula to find the equation of the line. All of them will give the same answer, obviously, ठीक है। So now we have the equation of the normal to the curve. In part 3, it says find the volume obtained when rotated about the x y axis, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, y axis। एक्सीलेंट, ये मैंने उस दिन क्लास में समझाया था कि इफ इट इज रोटेटेड अबाउट द वाई एक्सिस, यू विल मेक एक्स योर सब्जेक्ट एंड योर लिमिट विल बी 1 एंड 0, ठीक है। 1 एंड 0 होगी, ठीक है। अच्छा, ओके, इक्वेशन का है मेरी, हाँ। सो द इक्वेशन इज y is equals to root of 1 plus 2x, but as it is saying rotated about y axis, तो आपने पहले x को सब्जेक्ट बनाया। नाउ टू फाइंड द वॉल्यूम, मैंने फॉर्मूला उसने बताया था, पाई इंटू इन दिस केस एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट है 1 और 0। सो x की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। आई विल फर्स्ट एक्सपैंड इट एंड देन इंटीग्रेट इट एंड देन पुट इन द लिमिट्स टू फाइंड द वॉल्यूम, ठीक है। सो व्हेन आई एक्सपैंड वाई स्क्वायर माइनस 1, दैट बिकम्स वाई पावर 4 माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 एंड अपॉन 2 को यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। Now I will integrate with the limits 1 and 0, and I will add pi to the final answer. So when I integrate y power 4, that becomes y power 5 upon 10. हाँ, क्या मतलब, 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर 4, सॉरी, थैंक यू। ये 4, लेट्स कीप 1 upon 4 आउटसाइड, फजूल में तंग कर रहा है ना, सही है। So this will become y power 5 upon 5 minus 2y cube upon 3 minus y. Once you have integrated it, now you can again leave 1 upon 4 pi as common, ठीक है, outside. Now put in the limit 1 and 0, 0 डालने से तो 0 ही आ रहा है, so I'll just put in 1 over here. So this will be 1 upon 5 minus 2 upon 3 minus 1. Can someone please do this LCM thingy? 15, 3 minus 10 minus 115 is 15, minus 7 minus 15 is minus में आ रहा है, that's fine. Minus 22 upon 15 multiply by 1 upon 4 pi minus 2 2s are 2 7s are 7 upon 30. Can someone confirm, because positive में ही होगा आंसर। अच्छा, I want everyone to do one thing. Put this in the calculator as it is. पाई को छोड़ दो आप लोग। इन योर कैलकुलेटर मैंने आपको कुछ सिखाया था, लिमिट डालें 1 and 0, राइट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही लगा लो, एक्स यूज कर लो, ठीक है। एक्स एक्स यूज कर लो, फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, पुट इन द लिमिट्स 1 and 0, पाई भी छोड़ दो, पाई तो हम खुद लगा लेंगे एंड में। टेल मी व्हाट द कैलकुलेटर इज गिविंग एज आंसर। 2.15 पाई है ना, हमारा 2.15 आ रहा है, पाई को छोड़ के 2.15। हाँ तो सही ना, 7/30 आ रहा है, कुछ गलती कर दी है। एक्सपेंशन देख लेते हैं पहले। y पावर 4 माइनस 2y स्क्वायर माइनस 1, आई थिंक दैट इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, हाँ, y पावर 5 अपॉन 5 इज फाइन, 2y क्यूब अपॉन 3 इज फाइन, माइनस 5 जब 1 डालूंगा तो 1/5। अरे यार ये हो गया गलत, ये सही है, ये 2 5 10, नहीं तो सही तो है। 3 माइनस 10 माइनस 7 माइनस माइनस 22.15। Can someone check why am I getting this wrong? 2 2s are 2 11s up, 11/30 आ रहा है, तुम लोग का क्या आ रहा है? 2.50।
What about everyone who is online, beta? What is your answer if you have checked it from the calculator? Why are we getting it wrong? Have I expanded correctly? हाँ, -11/30 हमारा भी आ रहा है. हाँ, यही है. दिखाओ. ये चेक करो. गो टू द इंटीग्रेशन एंड x² -1/2 होल स्क्वायर. व्हाट मिस्टेक हैव वी मेड ओवर हियर? तुम्हारा तो सही लग रहा है मुझे. 2/1 और 0. लिमिट 1 और 0 सही है. लिमिट इज, दिस इज द इक्वेशन समा. आई डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग. क्या? जो जीरो वाली लिमिट आपने सिर्फ वन वाई के तो लगेगी क्या ना. हाँ, लेकिन 0 डालूंगा हर जगह. 0 0 0 तो 0 ही आ रहा है ना वो तो. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. 0 डाले तो 0 से आएगा. कैन यू पीपल अटेम्प्ट इट क्विकली ऑन योर ओन एंड चेक इफ आई मेड एनी मतलब इंटीग्रेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी है? y² -1/2 भी ठीक है, लेकिन चेक द इक्वेशन. 1 + 2x पावर हाफ है. क्या है भाई? क्या? क्वेश्चन नंबर 55. नहीं नहीं, उसी, हाँ मतलब ये P1 के पास में पड़ जाए ना. 55 का आंसर बताओ, पार्ट 3 का. हम्म. मतलब वो 2/15 ही आने हैं. हमारा आंसर कुछ गलत आ रहा है. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे? 0,1, विच इज फाइन. यार 1 और 0 तो उसने भी लिमिट लगाई है. इक्वेशन भी कोई डाली है. चलो वापस से कर लेते हैं एक बार. y² -1/2 होल स्क्वायर. इसको अगर मैं होल करूं, एक्सपेंड करूं मैं इसको, तो y⁴ माइनस, एक्सपेंड कर रहा हूँ ना मैं, 2y² है ना. a² -2ab + b². अरे आई थिंक, अस्तगफिरुल्लाह. बेटा ये +1 होता है. a² -2ab + b² होता है ना. ला हौल वला. ये तूने बोला था? तूने बोला था +1 होगा. आप बता रहे थे. Guys, why did none of you point out कि सर, इतना हम लोग आपको भी ट्रस्ट करते हैं, इतनी रुकी मतलब कि ये मिस्टेक. गाइस, आई मीन हाउ कैन यू नॉट पॉइंट आउट? ऑनलाइन पीपल आई एम टॉकिंग टू यू. दिस इज बिल्कुल. तुम लोग को ज्यादा देखना चाहिए. आपने तो बोला कि नहीं वो थोड़ी साइन वाली मिस्टेक हो जाती है, हो सकती है. मैं कह रहा हूँ वो नजर रखना उस पर. मैंने आई हैव ऑलरेडी सेट उस पर नजर रखना. मेरी वो हो जाती है यहाँ पे. ठीक है, मतलब ये तो ये रुकी. ग्रेड 6 का बच्चा नहीं कर सकता. आ गया 2/4 = 2/15 pi. Guys, online people, please be vigilant. You all of you just staring at me doing the question like, very well done, sir. Very well done. खैर, देखो again, 5 mark question, but can easily get it wrong with this rookie mistake. Okay. Lovely question number 59. You have to find the area and volume of the shaded region. What you'll have to do is find the area under the curve, under the line, and subtract. Then find the area under the volume, or volume under the curve, under the line, and subtract. Be very careful with the wordings given over here. I plan not to do this directly. I want you people to attempt this question on your own. 59, start करो. Area तो कर लेना चाहिए आप लोगों ने. For part A, just have to integrate it, right? And with the limits 2 and 1. So this is 4y power -2 -1. When I integrate it, that will become -1 upon -1 minus y. So you will write it as a minus 4 upon y. Minus y is your equation, right? You plug in the limit, which is 2. So -4/2 -4. And then -4/1 -4. So this becomes -2 -4 is -6, minus this is -8. बेटा मेरे +2 आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा. हाँ, 2 आ रहा है आंसर.
आंसर 2 है। अगेन कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लो ना। यूज योर कैलकुलेटर, पुट दिस इन द कैलकुलेटर विद द लिमिट्स 2 and 1। आई एम गेटिंग 2 एज माई आंसर, ठीक है। क्या? हाँ, ओ, रुकी रुकी। ओके, सो -4/y माइनस वाई, देखो बैड राइटिंग की वजह से क्या होता है, बैड राइटिंग। -4/2 -2 एंड देन, oh, so -6 -5, आंसर विल बी -1, ऑब्वियसली हम +1 ही लिखेंगे, राइट? द आंसर इज 1। I have no idea how did you get 2, but the answer is 1। And then the for the volume part, हाँ हाँ, देखो, फॉर द वॉल्यूम पार्ट द फर्स्ट स्टेप, सुनैव, सुभान, वी डू इज दी होल स्क्वायर द इक्वेशन, ठीक है। सो आई विल होल स्क्वायर 4/y² -1 पहले। तो व्हेन आई होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 16/y4 -8/y² माइनस +1 प्लस +1। नाउ आई विल इंटीग्रेट इट। सो व्हेन आई इंटीग्रेट 16 y -4, अब मेंटली कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 y⁻³ डिवाइड बाय -3, है ना। 8 power y -1 upon -1 plus y. And now I'll plug in the limits. So my integration, the final answer after integration is -16/3 y³ plus 8/y plus y. And now final answer में volume में भी attach pi as well, ठीक है? You can look at the lesson. So when I put 2 over here, 2 cube 8, 8 is 24, -16/24 is -2/3 plus 8/2, that's 4 plus 2. And then I will plug in 1. So -16/3 plus 8 plus 1. -2/3 plus 16/3 is how much? 14/3, ठीक है, ये 14/3 आ गया। 4 plus 2 is 6, and then 6 minus 9 is -3 ना। 14/3 -3 is 5/3, and then you add pi to the final answer, and that is it. No, no, no. I get what you're saying, beta. But in this case, the line is completely horizontal, okay? So there is no area or volume under the line. You get what I'm saying? If the line was slightly like this, in that case, you would have been correct, Sama. But because the line is horizontal, there is no area or volume under the line. It is only under the curve, right? This part is only under the curve. Okay, I'll just explain it separately. Look, I'll just draw it over here. Look. So let's say this was the curve over here, okay? And if I ask you to find the volume under the curve or area under the curve, you will take this or this limit, right? B and A, let's say, or B or 0. And you will just simply, you will not worry about this line. Agreed? But let's say if I made a line over here, like this, and then I asked you to find the area, then you will have to take the area under the line and the area under the curve as well. But uh, just one thing. Yeah. So if I make a line, look, if I bring the line over here like this, now there is no area under the line, right? The line is not covering any area. But if the line is slightly tilted, it will have some area under it. But if it is vertical or horizontal, there won't be anything underneath it. So that's why in this case, we just had to take the area and volume of the curve, okay? Acha, everyone, now, look, I'm ending the class early today with 5-10 minutes early, but please make sure, because we will be moving on to the new topic in the next class, you try as many questions as you can. Acha, I will just tell you some questions that I would want you to try and send them to me before Wednesday's class, ठीक है? चेक करने दो मुझे खुद। Okay, 63, 65, 64, सभी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहिए।
अगस्त में टाइम आ जाएगा अगले साल। अगले साल अगस्त में टाइम आ जाएगा, मत करो, मैं फोर्स तो नहीं था। अगस्त में आप कर अगस्त में 2026 नवंबर में एग्जाम होगा उसकी। एंड मेनी मोर दैट यू विल बी डूइंग ऑन योर ओन, बट एटलीस्ट इतने तो करने। That's enough for today, everyone. The office.